Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Mushtaq. Today I am here to make you write the classwork. For this, firstly, you will write the proverb tit for tat in the inverted commas. Then you will write day and date, Monday 6 July 2020. Students, your homework is Proverbs 17 to 20, and you will find these proverbs at page number 137. After that, you will write classwork with the marker, and in brackets you will write the classwork number. Students, you are going to write the summary, and the name of summary is the second voyage. The second voyage. You will start from the line, Sinbad tied himself with a large piece of meat. Again listen. You will write from the line, you will start from the line, Sinbad tied himself with a large piece of meat. Now let us start. Sinbad tied himself with a large piece of meat. सिंदबाद ने खुद को गोश्त के एक बड़े टुकड़े के साथ बांधा. Then तब a large eagle, एक बहुत बड़ा उकाब, took that piece and Sinbad into his nest. तब एक बहुत बड़ा उकाब उस टुकड़े को और सिंबाद को अपने घोंसले में ले गया. There he met, वहाँ पर सिंबाद मिला, a merchant, एक सुदागर से, told him his story, अब उसको अपनी कहानी सुनाई, and gave him a very big diamond, और उसे एक बहुत बड़ा हीरा दिया. There he met, a merchant told him his story and gave him a very big diamond. वहाँ पर वो एक सौदागर से मिला, उसको उसने अपनी कहानी सुनाई और उसे एक बहुत बड़ा हीरा दिया. आफ्टर दैट, इसके बाद, ही रिटर्न, वो वापस आया, टू बगदाद. आफ्टर दैट ही रिटर्न टू बगदाद. इसके बाद वो बगदाद वापस आया. He distributed, उसने तकसीम की, a lot of money, बहुत ज़्यादा रकम, among the poor, गरीबों के दरमियान, and enjoyed the rest of wealth, living peacefully, and enjoyed the rest of wealth living peacefully, और अमन से रहते हुए बाकी की रकम से वो लुत्फ़ अंदोज़ हुआ. It means that
उसने बाकी रकम अपनी ज़िंदगी के लिए सर्फ की और बड़े अमन से ज़िंदगी गुजारी। स्टूडेंट्स, ये आपका काम है। I hope you will write the next half neat and clean. Thanks. Have a nice time. Allah Hafiz.